Now we'll be discussing about fiscal policy, chapter 14. In unit 1, there's one point in your syllabus that's goals of macroeconomic policy, and उस time we discuss कि macroeconomic policy के दो parts होते हैं. First is your monetary policy and then comes your fiscal policy. अब मॉनेटरी पॉलिसी में सारे डिसीजंस आर टेकन बाय द आरबीआई, दैट इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एमपीसी, लेकिन फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट का रोल इन्वॉल्व होता है. What basically fiscal policy is? Fiscal policy refers to the shaping of tax structure, determining the amount of tax revenue for government expenditure on public to attain various objectives like increase in employment, price stability, etc. Now, fiscal policy can be expansionary or tightening depending upon the situation of the economy. The main instruments of fiscal policy are public or government expenditure, taxation and public borrowing. Public expenditure just अभी हमने डिस्कस किया था in chapter 11. तो public expenditure, usually the government does the expenditure on productive activities like infrastructure, basic industries which help in the growth of the economy, roads, buildings, the national highways, which will lead to a revenue flow in the future as well. For example, depression के time में the entrepreneurs and the firms are not able to invest in projects in order to avoid risk. Now government इस टाइम पे बहुत important इसलिए है because government leads to the expenditure on public for goods and services in order to inject fresh purchasing power among the public. So next is taxation. अब taxation में we have discussed कि tax major source है to increase the revenue of the government for both productive and non-productive activities. The last is public borrowing, जैसा कि हमने अभी public debt में discuss किया था in public finance. अगर हमारा expenditure ज़्यादा है and revenue कम है and tax fails to generate enough revenue, then government can resort to public borrowing. The government can resort to open market operations. They can issue government securities like bonds at attractive interest rates. In this way they can also finance their deficit. So these are the three major instruments of public policy. Do not confuse yourself with the monetary policy. Monetary policy में सिर्फ आरबीआई के रूल्स आ जाते हैं, जैसे कि बैंक रेट सेट करना, रेपो रेट सेट करना, रिवर्स रेपो रेट सेट करना. और फिस्कल पॉलिसी में सिर्फ तीन चीज़ें आती है: गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्स एंड गवर्नमेंट बोरिंग. गवर्नमेंट बोरिंग ऑल्सो नोन एज पब्लिक डेट. ओके, अभी मैंने बताया कि फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी भी हो सकती है और टाइटनिंग भी हो सकती है. सो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कब होगी? अब देखो, कोरोना वायरस आउटब्रेक है, फर्म्स एंड एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो अब फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी होगी, यानी कि हमें अब सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट विल इंक्रीज देयर एक्सपेंडिचर. अब टैक्स के मामले में हम टैक्सेस नहीं पे कर सकते इस टाइम पे ज़्यादा, बिकॉज हमारी इनकम कम है, हमारा इनकम फ्लो नहीं है अभी, तो टैक्सेस गवर्नमेंट डिक्रीज़ कर देती है. गवर्नमेंट बोरोइंग डिक्रीज़ हो जाती है, बिकॉज अगर गवर्नमेंट बोरोइंग में रिजॉर्ट हुआ तो जितनी भी परचेजिंग पावर है पीपल की वो और थोड़ी कम हो जाएगी. So next is objectives of fiscal policy. Now the first major objective of fiscal policy is economic growth and development. और this is one of the major goal. Government क्या करती है? Government increases the investment in the economy through tax policy, public borrowing, public expenditure. The government try to accelerate the growth by diverting the resources to high priority items. अब इस टाइम पे हाई प्रायोरिटी आइटम्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, दी बेसिक नेसेसिटीज़, फूड ग्रेन्स. अब गवर्नमेंट ने नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ मिनिमाइज़ कर दी है. प्लस इकोनॉमी की ग्रोथ और कैसे हो सकती है? एक्सपेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट सबसे मेजर पार्ट है.
अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी तो हमारी बिजनेस एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, बिजनेस एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने से वील रिक्वायर मोर लेबर इन ऑर्डर फॉर द इंक्रीज प्रोडक्शन, उनकी वेजेस इंक्रीज़ होगी, डिमांड इंक्रीज़ होगी, डिमांड इंक्रीज़ होने से दोबारा से इन टर्न प्रोडक्शन और इंक्रीज़ होगी, विच विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. और गवर्नमेंट कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करती है? दे स्पेंड ऑन major things like roads, power houses, canals, irrigation facilities, which are very much important for a developing country, especially like India. Subsidies should be provided. The next point is for objective of fiscal policy, that's reduction of inequality of income. The government expenditure and taxation can minimize the inequality of income and wealth. Higher taxes can be imposed to reduce the purchasing power of richer section, and poor people can be exempt from taxes or can be included in the lower tax slot. Luxury goods can be heavily taxed, and the tax revenue collected can be used on items that benefit the poor people the most. The third objective is price stability, which is one of the major objective of fiscal policy. During the period of deflation हो गया when the prices are reducing, government can rise their expenditure, impose less tax, which will increase the income of the people, and vice versa in the case of inflation. जब inflation ज़्यादा होती है, prices ज़्यादा होते हैं, then government अपना expenditure कम कर सकती है, tax ज़्यादा बढ़ा सकती है. एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अब एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सिंपली ये आ जाता है, अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रही है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो हमें मोर ऑफ लेबर चाहिए होगी, विच विल इन टर्न इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल. करेक्टिंग द बीओपी डेफिसिट. अब करेक्टिंग द बीओपी डेफिसिट, अर्लियर वी डिस्कस्ड कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होता है जब हमारा एक्सपेंडिचर ओवरऑल फिजिकल ईयर का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेवेन्यू. तो वन मेजर थिंग विच द गवर्नमेंट कैन डू इज़ टू रिड्यूस द इम्पोर्ट्स और इंक्रीज द इम्पोर्ट ड्यूटीज़. Now the last topic is limitations of fiscal policy in developing countries. अब limitations में for example in a developing country जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर होता है डेवलपिंग कंट्री का बहुत ही नैरो एंड रिजिड होता है. देयर आर मैनी लूप होल्स इन फैक्ट जिससे टैक्स इवेट कर सकते हैं लोग और जिससे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता. सेकेंडली, एज आई टोल्ड यू, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे मेजर चीज़ जो चाहिए वो है सेविंग्स, देन उन सेविंग्स को इन्वेस्ट करना. लेकिन इन डेवलपिंग कंट्रीज़, इंडिया का एग्जांपल ले लो, पीपल क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स इमूवेबल प्रॉपर्टी और ज्वेलरी में डाल देते हैं. जितनी भी सेविंग्स है प्रॉपर्टी ले लेते हैं या ज्वेलरी ले लेते हैं और वो सेविंग्स फिर इन्वेस्ट नहीं होती है.